Hello student, welcome to Empower IS. I am Shubhranshu Srivastava and on the platform of Empower IS we are going to start a series which is based on CSAT, UPSC, CSC exam. Fine. So in this particular series we are going to see all the topics which are important from the examination perspective. Either it could be a number system, percentage, profit loss, ratio, proportion, compound interest, simple interest, permutation, combination, probability, everything along with logical reasoning. We are going to cover each and every topic separately and in full detail along with the PYQs which have been asked from all these topics. Fine. And here the main thing which I want to convey you, or the thing which is different in this particular series in comparison to the other courses which are there, which are available online on CSAT, is that here we are not going to memorize any formula. Fine, we will try to avoid taking the variable x and y because it again increase the level of difficulties. Along with that, we will also try to avoid fraction because as many fractions we are going to use in our calculation, we are going to make our calculation more difficult. फाइन. सो ये तीन चीजें हम ध्यान में रखेंगे. सबसे पहले हम फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे. दूसरी चीज, हम वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई पी क्यू आर ये सब अपने क्वेश्चन में ना के बराबर यूज करेंगे. एंड थर्ड थिंग इज दैट वी विल ट्राई टू अवॉइड द फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन जैसे ही हमारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होता है हमारा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है. फाइन. तो बारी बारी धीमे धीमे हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे along with the PYQs. Let's see how what I am telling you is different from the other classes which are there or which might be available. Let's see by taking the example. So here, if we will focus upon this particular question, A and B can complete the work in 10 and 12 days respectively. Fine. So A and B start working together, and after 3 days A left the work. Find in how many days work will be completed. अब देखिए इस क्वेश्चन को if we are going to solve in a method which is different, if we are going to see these questions in a book, there we will observe that all the questions are being solved by taking fraction. So मैं जो आपको समझा रहा था कि किस तरीके से हम विदा फ्रैक्शन यूज किए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या बिना कोई भी वेरिएबल लिए. In question ko if we will focus upon, then see A and B can complete the work in 10 days and 12 days respectively. A and B start working together, and after 3 days A left the work. Find in how many days work will be completed. So in this particular question we are free, or in other word we can say that we are not interested in knowing the nature of the work. We are only interested in knowing the quantitative value of the work. मतलब कि हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि काम क्या हो रहा है, हमें ये जानना है कि कितना यूनिट काम हो रहा है, देन ओनली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस. तो यहाँ पर क्या है, काम जो है वो ए कंप्लीट कर रहा है 10 डेज में और बी कंप्लीट कर रहा है 12 डेज में. सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं लेट जो हमारा अमाउंट ऑफ वर्क है, लेट अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू, just like in our classes we used to take 100, but here I will not recommend to take 100 because when we are going to divide 100 by 10 we will not end up in fraction, but when we are going to divide 100 by 12 definitely we are going to end up in fraction. So when we are free, जब हम free हैं कि हम 10 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, so it's better to take that particular number which is exactly divisible by 10 and 12. So for that what we have to do, take the LCM. So LCM of 10 and 12 क्या होगा, 2 5 10, 2 6, or from here we can say that the LCM of 10 and 12 is 60. So अब हम कहते हैं कि let the amount of work is 60. Now this 60 is the total unit of work or the amount of work, and A can complete this 60 unit of work in 10 days.
B can complete this 60 unit of work in 12 days. So what is the efficiency of A? Efficiency of A means अगर 60 यूनिट वर्क है, इसको कंप्लीट करने में ए 10 डेज ले रहा है, तो पर डे ए कितना यूनिट काम कर रहा है? तो 60 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 6. Similarly, what will be the efficiency of B if B takes 12 days to complete this 60 unit of work? It means that the efficiency of B will be 5. B 12 दिन में 60 यूनिट वर्क कर रहा है, इसका मतलब B पर डे कितना यूनिट वर्क कर रहा होगा? 5 यूनिट. देखो, टाइम एंड वर्क को अगर हम देखें अपने बुक्स में या आज से पहले हम जब भी सॉल्व करते थे, वो हमेशा फ्रैक्शन में निकालते थे. फॉर एग्जांपल, अगर ए हैज द कैपेसिटी टू कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, so what we were doing, that we calculate the total amount of work done by A in one day, that comes out to be 1 by 12. बट ऐसा हम कुछ यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ टोटल डिफरेंट अप्रोच हम लेके चलेंगे. प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर मेथड, यू विल रियलाइज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मेथड. तो अगर आपका ये ट्री डायग्राम, if you have made this tree diagram, then believe me, 70% of the work, 70 to 80% of the work is already done. आगे पढ़ते हैं. A and B start working together and after 3 days A left the work. It means that after 3 days A left the work. It means that first 3 days में A और B दोनों काम किए हैं, और हमें पता है A और B एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 यूनिट प्लस 6 यूनिट मीन्स 11 यूनिट. सो A और B फर्स्ट 3 डेज में कितना काम कर लेंगे? 33 यूनिट. इज दैट क्लियर? अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? क्योंकि टोटल वर्क हमारा क्या था? टोटल वर्क हमारा क्या था? 60. तो 60 माइनस 33, दैट कम्स आउट टू बी 27 यूनिट. ये 27 यूनिट वर्क 3 दिन के बाद बचा है, और ये 27 यूनिट वर्क कौन करेगा? ए वर्कड ओनली फॉर 3 days. देयर आफ्टर ए लेफ्ट द वर्क. So this 27 unit of the remaining work is to be done by B alone. So how much time B will take to do this 27 unit of work? If in one day B can complete 5 unit of work, so total days B will take is equal to what? 27 divided by 5, that is equal to 5 whole 2 by 5 days. It means टोटल काम करने में कितना टाइम लगा? पहले तो ये 3 दिन जब ए और बी दोनों ने काम किया है, उसके बाद ये जो बी ने अलग से काम किया है. सो टोटल डेज कितना हो गया? टोटल डेज इज इक्वल टू 3 प्लस 5 होल 2 बाई 5 डेज, दैट इज इक्वल टू 8 होल 2 बाई 5 डेज. देखिए हाउ easily and beautifully we solved this question without going into the complication. हमें ना तो कुछ वेरिएबल लेना पड़ा, ना ही हमें फ्रैक्शन ज़्यादा इनकाउंटर हुए, बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन हो गया. So if you people think that this is a method which is easy, इसमें ना तो हमने वेरिएबल लिया, ना ही हमने कोई भी फॉर्मूला अप्लाई किया, ना ही हमने इसमें फ्रैक्शंस को अपने कैलकुलेशन के बीच में आने दिया. सो देखिए कितना इजी वे में ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया. फाइन. चलिए इसी तरीके से हम इसमें एक बार दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं. सो लेट्स सी the second question. A and B start working together, but after some day A left the work and whole work will complete in 9 days. Find after how many days A left the work if A and B can complete the work in 10 and 15 days respectively. Now see here, again the question is same. A and B start working together, but after some day A left the work and the whole work get complete in 9 days. Fine. Now find after how many days A left the work if A and B can complete the work in 10 and 15 days. So just like previous case, here also what we are going to do? Again, here also we are going to take the LCM. So what are the numericals which we are finding in the question? That is 10 and 15. So instead of taking any random value,
let's take that value which get exactly divisible by 10 and 15, जो 10 और 15 दोनों से exactly divide हो जाए, हम वैसा value लेते हैं. Okay, so if we are going to take that particular value, so for that what we have to do? For that we have to take the LCM of 10 and 15. So what is the LCM of 10 and 15? Let's calculate the LCM of 10 and 15. So 5 2 5 3 is 6 5 30. It means that we can say that 30 is the smallest number which is exactly divisible by 10 and 15. So as I told you in previous question, what we have to do? First of all, we have to draw the tree diagram. Once tree diagram is done, it means that 70 to 80% of our question is done. So see here, 30. Now 30 is the total unit of work, and A and B, these are the two participants who are completing the work. So A can complete the work in 10 days. It means that what is the efficiency of A? Here 3. 30 is the total unit of work, and A has the capacity to complete 10 unit of work per day. Uh, Sorry, A takes 10 days to complete this 30 unit of work. It means that A can complete 3 unit of work per day. Similarly, B takes 15 days to complete this 30 unit of work. It means that per day B takes, or B can do 2 unit of the work. Fine. Now what question is saying, A and B here, see, A and B started the working together, and after some day A left the work and whole work get completed in 9 days. इसका मतलब क्या है, A और B दोनों ने ही साथ में काम शुरू किया, बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क. ओके, सो रिमेनिंग वर्क किसने कंप्लीट किया? बी. और टोटल टाइम कितना लगा वर्क को कंप्लीट करने में? 9 डेज. इट मीन्स दैट वन थिंग इज क्लियर, दैट बी वर्क फॉर ऑल 9 डेज. क्योंकि ए ने छोड़ा है, बी तो काम कर ही रहा है, तो लेट्स कैलकुलेट द वर्क डन बाय बी इन 9 डेज. So work done by B in 1 day is 2. So work done by B in 9 days will be 2 into 9, that is 18 unit. Fine. So this 18 unit is the total amount of work done by B over a span of 9 days. और जो remaining work है वो किसने किया? Simple, the remaining work was done by A. So what is the remaining work? Total work was 30 and 18 unit of the work was done by B. So remaining work is 12 unit. Now this 12 unit work is done by A, and how much amount of work A can do in 1 day? 3 unit. So in how many days A can do 12 unit of work? So 12 divided by 3 means 4 days. So answer is 4. Again, just like in previous question, here also I will put emphasis on this particular tree diagram. Okay, एक बार ये ट्री डायग्राम बन जाएगा ना, देयर आफ्टर बिलीव मी, टाइम एंड वर्क हो या पाइप एंड सिस्टम हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन वी कैन हैंडल in a much easy way and in very much less time. आई थिंक आपको ये नए नए तरीके अच्छे लगे होंगे. इसी तरह से वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरी टॉपिक वन बाय वन एंड इन डिटेल. सो वॉट एवर द मेथड अभी तक आपने सीखा है, उन सभी मेथड को छोड़ दीजिए. हम बिल्कुल नए मेथड से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें ना तो हमें फॉर्मूला याद करना होगा, हमारे पास वेरिएबल्स जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में लेते हैं हम उसे भी ना के बराबर लेंगे, और कैलकुलेशन को बहुत इजी बनाएंगे. जैसे कि भी आपने दो क्वेश्चंस में देखा होगा कि कैलकुलेशन हमारा बहुत ही इजी होगा, जिससे गलती करने के चांसेस भी कम होंगे. तो टाइम एफिशिएंट रहेगा, एक्यूरेसी भी रहेगी. फाइन. आई थिंक you people have enjoyed this video. Keep watching this particular Empower IS platform, or keep visiting it. We are going to come across with various other short videos pertaining to each topic, and soon we are going to start the entire detailed batch related with CSAT. Okay, so thank you for today.